Good morning, my dear students. First of all, I welcome you into my YouTube channel and Talukdar Maths. Okay, so I hope you all are fine and you are doing your studies very effectively and sincerely. Okay, so today I am going to start a very new topic that is called linear inequality. Okay, the name of the chapter is what? Linear inequality. Earlier we have already completed almost 4 chapters, I think, and this is the 5th chapter, and this is called linear inequality. Okay, and regarding inequality and interval, I have created a video, and here I had discussed about the details, basic concept regarding the inequality and properties of inequality. Okay, and regarding interval also. My suggestion is that everybody should go with this video and then you watch this video. Then you get a link and you will understand easily this particular class. Okay, so let us going to start the particular class of topic linear inequality. Okay, and why inequality is introduced, that's I have to discuss today, and then further I will discuss about its few properties and solve the questions. Okay, you know that a situation I have given, that is here I have written, you see, Kavita have 500 rupees. Kavita has how many rupees? Kavita has how many rupees? 500. Okay, she wants to buy packet of rice. She wants to buy what? Packet of rice. How many packet yet not decided? This is unknown quantity. How many packets she is going to want? She go to market, and let us decide that she has 500 rupees. With this 500 rupees, how many packet of rice she can buy, and the price of each packet, और each packet का price कितना है? 50 rupees है. ठीक है, तो if I suppose that she buy x number of packets, we do not know what is the number of packets she is going to buy, because market में जाने के बाद उसको पता चलेगा क्या रेट है, उस हिसाब से वो आइडिया लगा सकता है. ठीक है, so suppose that this is I think 45 rupees. Okay, you say 45 rupees. Okay, price of each packet is rupees, suppose 45. So x number of packets she want to buy. तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी पर पैकेट 45, नंबर ऑफ पैकेट इज x, सो कॉस्ट प्राइस इज रुपीज़ व्हाट? 45x. दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस. ओके, सो दिस कॉस्ट शी हैज़ 500, दिस कॉस्ट विल बी मैक्सिमम व्हाट? 500. इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, बिकॉज उसके पास 500 ही है. शी हैज़ ओनली 500 रुपीज़. सो maximum value of this is a maximum of 45x is equal to what? Is 500. This is the statement. Maximum of 45x is 500. ठीक है, for example suppose that if I say this things x greater than equal than 2, तो आपको क्या पता चलेगा? x greater than equal than 2 means what? The लिस्ट वैल्यू x का वैल्यू 2 से शुरू हो रहा है, एंड देन 3, 4, 5 वट एवर बी, दैट मीन लिस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 2. एंड इफ आई से x इज लेस देन इक्वल देन 2, देन यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगी कि द वैल्यू ऑफ x स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड इट विल बी रिड्यूस. इट विल बी व्हाट? रिड्यूस, कम होता रहेगा, कम होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ऐसा होगा. ओके, सो हियर यू कैन से मैक्सिमम ऑफ x equal to what? 2. Maximum of x is what? 2. Maximum of x is what? 2. So if I say, because she has 500 rupees, this is fixed amount, and she's cost price become what? 45x. तो 45x maximum क्या हो सकता है? 500 हो सकता है. इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसको इतना ही कॉस्ट खर्चा कर सकता है. तो इसीलिए 45x have maximum value of 500, and from here 45x less than equal than 500 लिख सकता हूँ. मैक्सिमम ऑफ 500 क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है, या इससे कम करेगा. ये भी 400 हो सकता है, 450 हो सकता है, वट एवर भी, अकॉर्डिंग टू शीज नीड.
Okay, so this value 45x less than equal than 500, and from this situation, ये जो situation मैंने दिया है, from this situation what happened, we are getting a relation, and in this relation this particular symbol has used, and this type of equations created, and these equations are called what? Inequations, or you can say inequality, because equality is not there, inequality. इसमें क्या आया? Inequality का introduction हुआ है, ठीक है. So in such type of situation what happen, this type of symbol used, and we can solve this equation by what? By this you can solve this equation and get the value of x, and this type of equation by this situation created is called what? Inequality. So naturally, suppose that 3 and 2 are two numbers, and if we create a relation, we can say 3 not equal to 2. We can say 3 not equal to 2, or in other words, we can say 3 greater than what? 2, or in other words, you can say 2 less than what? 3. समझ में आ रहा है? Whenever two real numbers are not equal, in such cases, this type of relation will be introduced, either greater than or less than, and this type of relation are called what? Inequality. So what is inequality? Inequality is a relation between two real numbers. Two real numbers के बीच हो सकता है, and it is also relation between two algebraic expression. Since x is introduced, so it is an algebraic expression. Okay, between what? Two algebraic expression. So if I say twice x plus 3 equal to what? 2. So it is an equation. So if I say twice x plus 3y less than 2, then it is not an equation. It is called inequality, or you can say inequation. समझ में आ रहा है? So the power of x, the power of y, power of x, power of, this is called linear. It is called what? Linear equation. In how many variable? Two variable are what? X and y. And here twice x plus 3y less than 2. Here again power of x and power of y are what? 1. So this is called linear inequality. Linear means what? Highest power of x, if it is in two variable, both the variable will have highest power is what? 1. So it is called linear inequality, and it is called linear equation. So equality is the linear. You can say also linear inequation. Linear inequality, when variable are involved, the linear inequality is called linear inequations. Linear what? Inequation. Okay. So I hope you get an idea about what is inequality. Okay. Inequality is involved related to two real numbers, between two real numbers, or between two algebraic expression. दो algebraic expression के बीच inequality introduce होती है, या between two that is real numbers, it can also be. Now there are types of inequality. Suppose that if I say a greater than what? B, so here a and b are two real numbers, or suppose that ax plus b greater than what? C, or suppose say x is less than equal than what? Y, or suppose you can say twice x plus y, twice x plus 3 greater than equal than what? 2. These are four inequality I have written. Okay, this is between two real number, this is between two algebraic expression. Okay, so this two inequality is called strict inequality. It is called what? Strict. It is called what? Strict inequality, and these two are called slack inequality. Slack what? Inequality. Okay, तो slack inequality में क्या होता है? Less than equal than or greater than equal than symbol use, and strict inequality only greater than or something less than will be introduced. Okay,
So these are the two type of inequality. One is called strict inequality, another is called slack inequality. Everything is in your textbook. Go through this, you get the definition, you can write it. I am not going to write everything here. Just I want to give an idea about what is slack inequality and what is strict inequality. Okay. So there are many types of inequality, like if you say ax plus by greater than c, then it is called the linear inequality. Linear inequality in two variables. It is called linear inequality in two variables. And if I say x is greater than equal than suppose 3, then it is called linear inequality. Linear means highest power is 1. Okay, linear inequality in one variable. Linear inequality in one variable. And if I say ax square plus bx plus c greater than 0, suppose, where n not equal to 0, very important, when n not equal to 0, then highest power of x will be 2, and this is called quadratic. It is called quadratic inequality in one variable. It is called quadratic inequality in one variable. These are the few ideas you must know about this. Okay. And this type of inequality not representing a line, it representing a plane. It is representing a plane. Okay. Let us further in the class I will discuss why it represent a plane and why should not it represent a line. Okay. Understood? So when we will discuss about the two-dimensional geometry, we will discuss this thing also. So these are the few idea, and some properties I just remind you, already I have discussed in the video class, that is interval and inequality. You got it. Suppose that 3 is greater than 2. 3 is greater than 2. If you add any number on both side, if you add, अगर ऐड करेंगे, सपोज 1 ऐड कर लिया, दोनों साइड में 1 ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद क्या होगा, इन इक्वेलिटी चेंज नहीं होगा, जैसे थे ऐसे रहेगा, बिकॉज 3 + 1 4 होगा, 2 + 1 3 होगा, 4 इज ग्रेटर देन 3. सो कोई भी इनइक्वेलिटी जैसे a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज a + c ग्रेटर देन b + c होता है. ठीक है. सिमिलरली a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज a - c ग्रेटर देन b - c. If you subtract a number, real number from both sides, the inequality will remain same. This is the property. Next property is, suppose that 3 greater than 2. If you multiply a number, positive number on both sides. Suppose I am multiplying 3 with suppose multiplying 4, and here also multiplying 4. It will be 12 and it will be 8, and definitely both are greater than this. That's why this is greater than 3 into 4 is greater than 2 into 4. That means if you multiply both sides by a positive number, there will be no change in inequality. There will be no change in inequalities. It will remain same. But if you multiply it with a negative number, suppose I am multiplying with -2. So just giving an example to you. -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3 × -2 इज इक्वल टू -6. ये होगा, ये -4 होगा, और आपको पता है -6 इज लेस देन बड़े नंबर के अगर माइनस हो तो ये छोटा बन जाती है. तो दैट्स वाई -6 इज लेस देन -4. नंबर लाइन में जाइए तो इट इज़ 0, इट इज़ सपोज -4, इट इज़ सपोज -6. सो -6 क्या है, 0 से ज़्यादा डिस्टेंस में है, तो दिस इज लेस देन नंबर लाइन में कोई भी नंबर, सपोज दिस इज द नंबर, उसके लेफ्ट में जो नंबर होगा वो क्या होगा, प्रीवियस नंबर से छोटा हो. जैसे 1 हो तो 1 से क्या है, 0 छोटा है. सपोज 2 हो, 2 का लेफ्ट क्या है, 1 है, तो 1 इज लेस देन 2. तो सिमिलरली -6 इज लेस देन -4. ओके.
So if you multiply it with a negative number, then what happen? Inequality will change हो रहा है. तो ये very interesting is that whenever you multiply it by negative number in both side of an inequality, what will happen? The inequality reverse होगा. inequality क्या होगा? reverse होगा. ठीक है. Similarly for the division also, if you divide by suppose उसको अगर 2 से divide किया है, उसको अगर 2 से divide किया तो क्या होगा? साइन चेंज नहीं. पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं. ये 3/2 क्या है? 1.5 है. ये क्या है? 1 है. तो ग्रेटर देन है कि नहीं? सो डिवाइड करने से पॉजिटिव नंबर से चेंज नहीं होता. इफ़ यू डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर तो क्या होगा? साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. साइन क्या होगा? चेंज हो. बिकॉज ये क्या है? -1.5. ये क्या है? -1 है. नंबर लाइन में जाइए. दिस इज़ 0, दिस इज़ -1 एंड -1.5 इधर होगा. तो -1.5 क्या है? 1 से छोटा है. दिस इज लेस देन. ओके. ये क्या था? लेस देन होगा. यस. पहले क्या था? 3 ग्रेटर देन 2 था ना. 3 ग्रेटर देन 2 था. इसके डिवाइड -2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? ये साइन क्या हो रहा है? चेंज होगा. दिस आर दी प्रॉपर्टीज. तो सिंपल वे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज and all details are discussed in the earlier videos. Please go through the video again. I repeatedly told you because you people are very reluctant to not watch the video. Please watch it. More you watch, more conception will be clear. Okay. एक वीडियो को बार बार देखो. जितना वॉच करोगे इतनी बार ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे. तो वॉच इट फॉर क्लियर कॉन्सेप्ट. मैथमेटिक्स में क्या है? कुछ प्रॉब्लम कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं. बेसिक फंडामेंटल चीज़ को बढ़िया से क्लियर करना चाहिए. जो जितना क्लियर होगा आपका बेस इतना स्ट्रांग होगा. जितना बेस स्ट्रांग होगा आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. छोटा छोटा चीज़ क्या होती है? प्रॉब्लम के बीच में हमें ज़रूरत पड़ती है. तो वहाँ में अगर कंसेप्ट टिक ना हो तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगी. अनदर कॉन्सेप्ट इज सपोज आई नो दैट यू नो दैट 3 लेस देन व्हाट? 2. 3 इज लेस देन व्हाट? 2. इफ़ आई मेक इट्स रेसिप्रोकल, उसका अगर रेसिप्रोकल बना लो तो 1/3 होगा. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2. अभी देखो दोनों के बीच कौन सा बड़ा है? इट इज़ व्हाट? 1/3 है. 1 का थर्ड है, 1 का हाफ. तो ये बड़ा होगा. सो लेस देन होगा. इसमें क्या हो रहा है? सपोज दिस इज 3 इज लेस देन 2. इफ़ यू टेक इट रेसिप्रोकल देन व्हाट विल हैपन? आई एम सॉरी, ये 3 ग्रेटर देन 2 है. 3 ग्रेटर देन व्हाट? 2. सो रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी इज रिवर्स. इनइक्वालिटी क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है. सो यू कैन राइट एन रिलेशन a लेस देन b implies 1/a greater than what? 1/b. इनइक्वालिटी चेंज होगा. और a greater than b होगा तो क्या होगा? 1/a लेस देन 1/b. इन दिस वे inequality will be changed. Okay. So I hope you understand. सम इंटरवल के बारे में मैंने डिस्कस किया था. सपोज दैट दिस इज योर 2. ओके. दिस इज a number 2. दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी एंड दिस इज व्हाट? पॉजिटिव इन्फिनिटी. Yes or no? So if I say x is greater than equal than 2, then you understand that value of x starting from 2 towards what? Positive infinity. 2 से शुरू होगा. इसमें 2 से शुरू होगा. Yes. This is a closed ball and from here this is the value. So from here you can write it is what? Interval. ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा. ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड इफ़ इट इज़ व्हाट? ओनली ग्रेटर देन 2 देन इट विल बी एन ओपन बॉल. इसमें ओपन रखेंगे. ओपन का मतलब है x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता. तो इसमें क्या होगा? ओपन होगा. समझ में आ रहा है? एंड इफ़ सपोज आई से x इज ओनली लेस देन व्हाट? लेस देन व्हाट? 2. व्हाट यू अंडरस्टैंड? x इज लेस देन 2 मीन्स व्हाट? ओनली लेस देन 2. तो वहाँ से ओपन शुरू होगा. 2 से शुरू होकर लेफ्ट तक आएगी. दिस इज देन ओपन से शुरू होकर क्या होगा? नेगेटिव इन्फिनिटी. तो व्हाट विल बी द इंटरवल? इंटरवल क्या होगा? 2 से शुरू होकर नेगेटिव इन्फिनिटी. ओके. ओपन, तो बोथ साइड इज ओपन इंटरवल. ओके. एंड इफ आई से x is less than equal than 2 then it will be what? Close. ये क्या होगा? क्लोज हो जाएगी. ठीक है. ये सारी चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा रिविजन चाहिए. आई जस्ट रिमाइंड इट बिकॉज आई हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स अर्लियर. ओके.
So I discussed few things regarding the basic idea about what your inequality. Okay, so let us solve 1-2 question and you will get an idea. Question, suppose you have to solve twice x plus 3 by 2 is greater than x minus 1 by 3. Okay, this is the inequality and you have to find where x belongs to what integer. x क्या करना है, आप इंटीजर में निकालना है. ठीक है, x belongs to what integer. This is your question. So start with twice x plus 3 divided by 2 greater than what x minus 1 divided by what 3. First our job will be ये जो 2 है ये जो 3 है दोनों को रिड्यूस करना, रिमूव करना है. ठीक है, हाउ आई कैन रिमूव इट. 2 इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे और इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 कैंसिल हो सकता है. पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा. ठीक है, हो गया ना. तो ये क्या होगा, 2 कैंसिल हो गया ना. देखो कैसे हो रहा है, 2 कैंसिल हो गया. अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है. तो इसमें साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया. फिर अगर आप ये 3 हटाना है तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगेन वी आर मल्टीप्लाइंग विथ ए पॉजिटिव नंबर एंड देयर फॉर नो चेंज. अंडरस्टूड. सो ये 3 कैंसिल हो गए. राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड विल बी 2 इंटू एक्स माइनस 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी व्हाट 3 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 3 हो जाएगी. तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव नंबर है और ये जो पॉजिटिव नंबर दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है. यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इफ़ दे आर पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव होगा तो आप कर सकते हैं, तो उस आपका इनइक्वलिटी में चेंज नहीं आएगी. तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट जस्ट आई वांट टू व्हाई आई मल्टीप्लाइड 3 विद दिस and why I multiplied 2 with this, just I explain it. Okay, तो आप शुरू करेंगे ऐसे. So your equation is what, twice x plus 3 divided by 2 greater than what x minus 1. Very careful whenever you are multiplying with positive or negative, very careful. So 3 into twice x plus 3 is greater than 2 into x minus 1. ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. This 2 will be multiplied with this 2 will multiply with this. Okay, so from here you can write 6x plus 9 greater than what twice x minus 2 and ये twice x इधर ले आओ. 6x minus twice x is greater than 9 इधर ले सकता हो, क्योंकि हम कोई भी नंबर माइनस कर सकते या प्लस कर सकते, कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए कुछ भी कर सकते. 9 इधर ले जाओ, -2 minus 9. So here 4x is greater than what minus 11 and to get what x you dividing both side by 4. अगर किस से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ. 4 इज ए पॉजिटिव नंबर, सो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो x is greater than 11 by 4 minus 11. so where x is greater than what पॉइंट से डिवाइड करें -2.7 something. Okay, 2.75 I think, ऐसा कुछ होगा. yes 2.75 है. तो नंबर लाइन ड्रॉ करो. नंबर लाइन में पता चलेगा दिस इज योर दैट इज व्हाट इज कॉल्ड 0. This is 0 and this is -1, this is -2 and this is -3. okay, and -2.75 बीच में होगा, इसमें कुछ होगा कि नहीं. now you are getting x greater than what -2.75. -2.75 से बड़ा इंतज़ार क्या है, ये तो -2.7 है, -2.75 है. तो बड़ा नंबर क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, अप टू infinity, up to what infinity. Therefore the solution set is
ये सोल्यूशन सेट होगा, एक सेट होगा, क्या होगा, -2 से शुरू होगा, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट. ओके, दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. इस इन इक्वेशन में मैंने कहा है, इन इक्वेशन में सोल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट होती है इन इक्वेशन में, और इन इक्वालिटी का जो सोल्यूशन होती है, ये सोल्यूशन क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, फिक्स नहीं होता. सो वी राइट सोल्यूशन सेट. सोल्यूशन मोर देन वन हो तो ये एक सेट में लिख सकता हूँ, दैट्स वाई इट इज़ ए सोल्यूशन सेट. सोल्यूशन इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Suppose I consider a question regarding what real numbers. Suppose that I take a question, this is solved. You are going to solve half into 3x by 5 plus 4 is greater than equal than 1 by 3 into x minus 6, where x is a real number. Your solution should be in terms of what, real number. Okay, where x belongs to what, real number. ठीक है. सो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, तो सेम वे दिस इज़ ए पॉजिटिव नंबर, दिस इज़ ए पॉजिटिव नंबर, सो ये हाफ तो है, उसमें मल्टीप्लाई होगा एंड दिस 3 विल बी मल्टीप्लाई हियर. सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट 3x by 5 plus 4 greater than equal than 2 into what, x minus 6. Okay, so from here you can write 3 into, थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, 5 that is 3x plus what, 20 greater than equal than twice x minus what, 12. Understood? Okay, or everything you are understanding. Now this 5 is a positive number, it will be multiplied with this, and this will be multiplied 9x plus 60 is greater than equal than 10x minus 60. Okay, so आप क्या कर सकते हैं, ये 10x इधर ले आओ, 9x माइनस 10x greater than equal than 60 इधर ले जाइए, राइट हैंड साइड minus 60 minus 60. Yes, hope you are understanding. This is the same way as equation are solving. तो minus x greater than equal than minus 120, minus what, 120. अभी देखिए ये x के आगे माइनस को हटाना है. हाउ we can remove the minus, we can multiply both side by a minus 1. जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स होगा. तो फ्रॉम हियर यू कैन से x इज लेस देन इक्वल देन व्हाट, 120. हाउ टू गेट, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट, minus 1. सो योर x इज लेस देन इक्वल देन व्हाट, 120. ठीक है. आई होप और माई कैलकुलेशन इज करेक्ट. इफ एनीथिंग रॉन्ग प्लीज़ रेक्टिफाई, बिकॉज करते वक्त हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाती है. तो योर मेन आइडियाज शुड बी देयर इज़ प्रोसीड्यूर. इन प्रोसीड्यूर में कोई गलती नहीं होना चाहिए. हाँ, कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई, ये अलग बात है, रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट कंसेप्शन शुड बी क्लियर, प्रोसीड्यूर शुड बी क्लियर. ओके, सो x इज लेस देन इक्वल देन व्हाट, 120. नाउ यू ड्रॉ द नंबर लाइन. नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए. दिस इज सपोज 120. This is positive infinity, this is what, negative infinity. x is less than equal than what, 120. 120 से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है. दिस इज 120, क्लोज होगा, शुरू हो रहा है 120 से, अप टू व्हाट, negative infinity. Therefore what is the solution, since x belongs to R, therefore solution set is, what is the solution set, 120 से शुरू हुआ, कहाँ तक, नेगेटिव. दिस इज क्लोज, इट इज़ व्हाट, ओपन. ठीक है. सो दिस वे यू कैन सॉल्व the questions. I am not going to solve every questions. I have given an idea to you.
इंटीजर वाला होगा तो इंटीजर हो या नेचुरल नंबर हो तो इंटरवल नहीं होगा। अगर रियल नंबर में सोल्यूशन निकालना है तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, इंटरवल में आएगी, ठीक है, इंटरवल में आएगी, ठीक है। बिकॉज हियर सारी नंबर को लेना है, कोई भी नंबर चुनना नहीं है, इसीलिए इंटरवल में आएगी। और अगर इंटीजर में लेना है तो अगर इसको x बिलोंग्स टू z होता तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता, इसमें 119 देन व्हाट 118 इन दिस वे, then you can write the solution set in tabular form, and if the solution set is set of real number, अगर real number हो तो आप आंसर क्या में लिखेंगे, इंटरवल में लिखेंगे। ये आप लोगों को गलती नहीं होना चाहिए। So I have solved 2 questions today and I am not going to make this video more lengthy because in the next class I will finish this particular chapter, okay. This chapter is this basic idea is required, and go through the videos that is I have already given, so that's why I am not going to details in this particular video, okay. मैंने ज़्यादा नहीं गया है, और कुछ questions I will give you as an homework, you try and you have to solve it, okay. So with all the best, I complete here. Thank you very much, have a good day ahead.